Hello, good morning, my dear students. Welcome to my YouTube channel Khandwal Physics. तो आज आमे गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक आरंभ करिबा लेंस थ्योरी. सो लेंस कोन ता ऊपर आज आमे डिटेल डिस्कशन करिबा एंड लेंस फार्मूला 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. That is the relation between focal length, object distance and image distance. आमे गोटे रिलेशन डेवलप करिबा. क्लियर? तो आसो लेंस ऊपर आज आरंभ करिबा. So what is lens? So it is a piece of, it is a portion or piece of refracting material bound between two refracting surfaces one of which must be spherical. तो गोटे रिफ्रैक्टिंग मटेरियल जदि दुईटा रिफ्रैक्टिंग सरफेस द्वारा बाउंड हेकी थिबो तारे ताको हमें कहूचे लेंस, किंतु तार गोटे रिफ्रैक्टिंग सरफेस शुड बी spherical. Okay, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन there are two types of lenses. लेंस होची दुई प्रकार. प्रथम प्रकार होची हमर कन्वर्जिंग लेंस. और याकू भी कहा जाए कन्वेक्स लेंस. तो कन्वेक्स लेंस पुणी देख सपोज ये हूँ आमर गोटे कन्वेक्स लेंस. सो जनरली कन्वेक्स लेंस रे कौन थाए तार जो मिडिल पोर्शन टा थिक थाए और हमर एड्स गुड़ाक पॉइंटेड थाए. ओके, ये जो मिडिल रो थिकनेस अपेक्षा आम जिते बड़े एंड आड़ को जीवा एड्स आड़ को जीवा विड्थ टा कोन हबो ग्रेजुअली देख कमी 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 आसीबो. तो एई प्रकार लेंस को आमे कहूचे कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस को कहीं के कहा जाए ना. जदि आमे गोटे कन्वेक्स लेंस नेबा, कन्वेक्स लेंस रो कैरेक्टरिस्टिक्स होची प्रिंसिपल एक्सिस को जदि किछि आमे पैरेलल रे आमे कंसीडर करिबा, रे रिफ्रैक्शन हे सारला परे से माने कन्वर्ज करिवे. देखो ए पैरेलल सेट ऑफ रे जदि जिबे रिफ्रैक्शन हे सारला परे कन्वर्ज हेबे. ओके, मु पैरेलल सेट कंसीडर कली, तमे जे कोनो से रे भी कंसीडर करिबो रिफ्रैक्शन हे सारिबा परे दे विल कन्वर्ज. द विड्थ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे विल गो ऑन डिक्रीजिंग. एटा धीरे धीरे विड्थ टा डिक्रीज करी करी जिवो. ताने रिफ्रैक्टेड रे गुडा को कन्वर्ज करिबा को जिबे गोटे पॉइंट आडो को. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड योर कन्वर्जिंग लेंस. जति कि हमर कन्वेक्स लेंस सब गुडा को होचे हमर कन्वर्जिंग लेंस. ओके, किंतु स्पेशल सिचुएशन रे माने डाइवर्जिंग रो भी काम करि परिबे. सेटा परे हम डिस्कशन करिबा. जदि लेंस रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थारु सराउंडिंग रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जदि अधिका थिबो ताहले ये डाइवर्जिंग परिका भी काम करिवो, जोटा कि हमें लेंस मेकर फार्मूला रे हमें डिस्कशन करिबा. क्लियर? सो देखो सपोज ये होची गोटे लेंस, कन्वेक्स लेंस. तुम देखि परुछ याकू जदि मो एठे स्फीयर तयारी करिबी
यार रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन हबो कम हबो किंतु यार देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन हबो बहुत अधिका हबो तेणु करी आकु कहा जाए डबल कन्वेक्स लेंस बोली आकु कहा जाए माने रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिफरेंट यार सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर हबो r1 यार सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर हबो r2 ता माने r1 नॉट इक्वल टू r2 ये होचे हमरो डबल कन्वेक्स सरफेस और डबल कन्वेक्स लेंस जदि दुई पट जाकर हमरो दुई पटर जदि r1 यार रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज r2 और जदि r1 इज इक्वल टू r2 हुए द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस जदि समान ही जाए ताहले आकु कहा जाए इक्वी कन्वेक्स और बाई कन्वेक्स बोली कहा जाए क्लियर तापरे देखो जदि एमती का शेप रो गोटे लेंस थाए जार की गोटे पटे देखो प्लेन सरफेस एटा हो देखो प्लेन सरफेस आउ गोटे पटे कन्वेक्स अछि मिडिल रे देखो थिक अछि आउ एड्ज रे देखो थिन अछि मिडिल रे थिक एड्ज रे थिन जदि थाए ताहले ये होछि कन्वेक्स सरफेस आकु कहा जाए प्लानो कन्वेक्स हमरो एठी होछि रिफ्रैक्ट हमरो रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज ए जो कन्वेक्स सरफेस रो r1 ए प्लेन सरफेस रो जदि r2 आमे जानि छे प्लेन सरफेस रो रेडियस ऑफ कर्वेचर केते हबो इन्फिनिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज इन्फिनिटी जदि गोटे सरफेस रो रेडियस ऑफ कर्वेचर जदि इन्फिनिटी हुए ताहले ताको आमे कहबा प्लानो कन्वेक्स ओके तो फोर्थ टाइप होचे हमरो आपको कहा जाए कनकेवो कन्वेक्स तो गोटे सरफेस देखो कनकेव अछि आउ गोटे सरफेस देखो कन्वेक्स अछि मिडिल रे थिक अछि एड्ज रे थिन अछि मिडिल रे थिक एड्ज रे जदी थिन थाए से होछ हमर कन्वेक्स लेंस ओके तेनु करी आपको कहा जाए कनकेवो कन्वेक्स लेंस बोली कहा जाए अच्छा एमती गोटे नोमेनक्लेचर रो गोटे रूल अछि प्रथमे कार नाटा लिखा हबो कार ना को मेंशन करा जिवो जार की रेडियस ऑफ कर्वेचर कोन थिबो अधिका थिबो एटी तुम देखि परिबो आको जदी मु एक्सटेंड करिवि देखो कनकेव सरफेस रो रेडियस ऑफ कर्वेचर अधिका हबो किंतु कन्वेक्स रो जदी मु टाणी देखो कन्वेक्स रो देखो छोटिया हबो कन एठी देखे देबा एमती देखो इसी देख पारछ तो एठी हमर कनकेव सरफेस रो रेडियस ऑफ कर्वेचर अधिका थिबा जोगु तार ना को प्रथमे मेंशन करा जाए कन्वेक्स सरफेस रो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम थिबा जोगु ता ना परे आसे तो अल्टीमेटली ये होची हमर कन्वर्जिंग लेंस ये रे को कन्वर्ज करिवो रिफ्रैक्शन हे सरला परे ए चारि जण जाको ए चारिटा टाइप रो हमर जो लेंस सब गुडा कहउचंदी कन्वेक्स लेंस कोन पई ना देखो मिडिल रे थिक अछि आउ एड्ज रे थिन अछि प्रथम कथा द्वितीय कथा जदि हमरो इटा डेंसर मीडियम थिबो आउ सराउंडिंग जदि रेयर मीडियम थिबो ताहले एमाने रिफ्रैक्शन हे सरला परे बीम को कन्वर्ज करेबे सो ये होचे हमरो चारि प्रकार कन्वेक्स लेंस आउ देखो इटे प्लानो कन्वेक्स काहे के कुआ गला ना प्लेन सरफेस रो रिफ्रैक्टिव हमरो सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कोन अधिका तेनु करी प्रथमे प्लानो लिखा जिवो तापर कन्वेक्स तो इट तो बाई कन्वेक्स डबल कन्वेक्स नो प्रॉब्लम एट ऑल तो द्वितीय प्रकार लेंस होची हमरो डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस कहा जाए किंबा आकु कहा जाए कनकेव लेंस आकु कनकेव लेंस कहा जाए तो कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग कहीं को कहा जाए
ना रिफ्राक्शन हे सारिबा परे बीम ता हमरो डाइवर्ज करिवो बीम डाइवर्ज करिवो तो चारि प्रकार पुणी आउथरे देखिबा देखो ये होची हमरो प्रथम प्रकार रो जोठी की देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर अलगा अछि तो प्रथमे आमे केमती जानि परिबा जे इटा होची गोटे डाइवर्जिंग किबा कनकेव लेंस बोली केमती जानिबा तार मिडिल रे थिन थिबो आउ एज रे थिक थिबो जस्ट उलटा एटा देखो मिडिल रे थिक थिला एज रे थिन थिला एटी मिडिल रे थिन रहिबो आउ एज रे थिक रहिबो क्लियर एटा होची प्रथम द्वितीय होची रिफ्रैक्शन हेई सारिबा परे रे गुडा को डाइवर्ज करिवे तन करी आपको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाए तो ये होची हमरा डबल कनकेव तामाने R1 नॉट इक्वल टू R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस देखो एट देखि परिबा तो यार जदि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिबा यार देखो अलगा आसीबो यार जदि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिबा देखो एटा अधिक आसिला तो R2 R1 और R2 अलगा थाउची तेणु करी आपको हमें कहिबा डबल कनकेव सिमिलरली देखो नेक्स्ट होची रेटिकुलर बिहेवियर जगह क्रिएट करिबा तो नेक्स्ट टाइप होची हमर सेकंड टाइप होची हमर जदी दुई पट जाकर हमर रेडियस ऑफ कर्वेचर समान थिबो देखो एपटर रेडियस ऑफ कर्वेचर जहा हबो एपटर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ताहा हबो त माने इठी R1 इज इक्वल टू R2 याको कहा जाए बाई कनकेव आको बाई कनकेव बोली हमें कहिबा क्लियर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नेक्स्ट होची हमरो प्लानो कनकेव एटा गोटे सरफेस प्लेन थिबो आरो सरफेस टा कनकेव थिबो देखो मार्क द डिफरेंस ओके गोटे पटे देखो प्लेन अछि इठी गोटे पटे कन्वेक्स अछि एठी गोटे पटे प्लेन आ गोटे पटे कनकेव तो आपको प्लानो कनकेव लिखिबा कोन पई ना प्लेन सरफेस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी एठी देखो R2 व्हिच इज लेस देन योर इंफिनिटी दैट्स व्हाई एठी रो कहिबा को प्लानो कनकेव मिडिल रे देखो थिन आउ एडजेस रे ठीक थिबा जोगु ये होची कनकेव लेंस आ प्लानो आगो काहे लिखिली ना तारो रेडियस ऑफ कर्वेचर होची प्लेन सरफेस रो अधिका एंड लास्ट वन लाइक दिस सो पुणी उथरे देखो एठी हमरो मिडिल रे हमरो थिन रहिबो एडजेस रे हमरो थिक रहिबो बुझि परला तो एटा हबो हमरो कन्वेक्सो कनकेव ओके एटी देखिबो तमे कनकेव सरफेस रो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो छोटो रहिबो आ कन्वेक्स रो देखो बड़ रहिबो तेनु करी प्रथमे कन्वेक्स रो ना आसिला तापरे कनकेव रो ना आसिला तो कन्वेक्सो कनकेव किंतु अल्टीमेटली ये होची कनकेव लेंस ए चारि प्रकार जा कहउछन हमरो कनकेव लेंस माने डाइवर्जिंग लेंस रिफ्रैक्शन हे सारिबा परे बीम विल बी डाइवर्जिंग क्लियर सो ये होची हमरो टाइप्स ऑफ लेंसेस ओके वीडियो को पॉज करके नोट करा तापरे सुना किसी इंपोर्टेंट टर्म्स हमरो आवश्यक अछि सपोज ये होचे हमरो आमे जनरली गुडे एजम्पशन आमे नेबा सो फर्स्ट एजम्पशन हमरो होची पूरा आरंभ रु शेष पर्यंत आमे एई एजम्पशन को नै कि हमरो डेरिवेशंस करिबा फार्मूला गुडा डिराइव करिबा तो प्रथम एजम्पशन होची द ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंसीडर्ड एज पॉइंट 1 तो ऑब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट इज एज्यूम्ड टू बी पॉइंट 1
पॉइंट ऑब्जेक्ट आम कंसीडर करबा और जदि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी आम कंसीडर करूचे दैट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स सेकंड रे द एपरेचर इज वेरी स्मॉल aperture of lens must be very small aperture कहा को कहा जाए this is the aperture पूरा 8 आरंभ करी कि ए पर्यंत जो डायमीटर ये जो सर्कुलर आउटलाइन रो डायमीटर होचे हमरो aperture suppose this is m this is n this mn is the aperture of the lens which is considered to be, which is assumed to be very small. Number 3 re, we will consider thin lenses. Okay, the lens is very thin. पूरा thin lens consider करिबा. So thin lens consider करिबार reason भी अछि कारण तार अछि काहे कि धीरे धीरे हमें डिस्कशन करिबा एंड 4 नंबर रे द रेस आर ऑल द रेस आर पैराक्सियल तो हमारा इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे विल मूव क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो सब गुडा हमें पैराक्सियल रे को कंसीडर करिबा मार्जिनल रे को कंसीडर करिबानी आ सब जाक रे हमरा पैराक्सियल हबो कोन पई ना एपरेचर हमरा वेरी स्मॉल अछि ए सब कथा हम डिस्कशन करिचे मिरर रे मध्ये हम ए कथा सब डिस्कशन करिचे ऑलरेडी ओके तनो ये तो रिपीट होउचे ठीक है फास्ट मु जाउचे ओके सुन सपोज दिस इज द कन्वेक्स लेंस और जनरली हमें कौन कंसीडर करिबा इक्वी कन्वेक्स किंबा इक्वी कनकेव लेंस को हमें कंसीडर करिबा से होची हमरो इक्वी कन्वेक्स और ये होची हमरो इक्वी कनकेव लेंस क्लियर अच्छा माने दुई पट जाकर हमरो रेडियस ऑफ कर्वेचर समान एपटर रेडियस ऑफ कर्वेचर एपटर सरफेस रा रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम इट भी एपटर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरा पूरी सेम रहिबो क्लियर अच्छा तो यार रेडियस ऑफ कर्वेचर को मानकर ए जो फर्स्ट सरफेस को जदि मु एक्सटेंड करबी इट विल बी ए स्फीयर तार गोटे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहइबो ताको सपोज मु ना देली C1 सेमति आकु जदि मु गोटे स्फीयर कंप्लीट करबी यार भी गोटे सेंटर रहइबो ताको हमें ना देबा सपोज C2 सो C1 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस एंड C2 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द सेकंड सरफेस ए दुईटा जाक सेंटर ऑफ कर्वेचर को जदि हम गोटे स्ट्रेट लाइन द्वारा कनेक्ट करिबा आ आकु एक्सटेंड कर देबा बोथ साइड को जो स्ट्रेट लाइन तैयारी होबो ताकु कहा जाय प्रिंसिपल एक्सिस सो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस इज ए स्ट्रेट लाइन that passes through the two centers of curvature of the lens clear अच्छा तापर नेक्स्ट होची वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आमे जोटा को मिरर रे पोल मेजरमेंट करूथिले all the measurements were measured from pole in case of mirrors and single refracting surface रे मध्ये आमे पोल रो मेजरमेंट करूथिले किंतु एठी गोटे नुवा टर्म आसीबो जाको कुहा जाय हमरो ऑप्टिकल सेंटर सो ऑप्टिकल सेंटर कौन ना ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस either inside the lens or outside the lens through which a incident light goes undeviated जदि गोटे रे आसीबो प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर गोटे एम्ति का गोटे पॉइंट अछि ए प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर कोठी भी गोटे एम्ति का पॉइंट अछि सेही पटे जदि ए इंसिडेंट रे गति करे इट विल मूव अनडेविएटेड गति करिवो सो दिस इज द पॉइंट कॉल्ड योर ऑप्टिकल सेंटर बोली कहा जाए ठीक है इटे मु डेप्थ को जाइके तो बुझेबी तुमको देखो एटी जदि गोटे छोटिया पोर्शन मु देखो एटी काटिबी ए छोटिया पोर्शन टा को तुमको जदि मु एटी शो करेबी इट अपीयर्स एज इफ इट इज ए ग्लास स्लैब
इट इज ए ग्लास, इट अपियर्स लाइक ए ग्लास स्लैब। देखो ए पोर्शन टाको देखो, ए पोर्शन टा पाखापाखि पूरा गोटे ग्लास स्लैब परिका देखा जाउची। आ ग्लास स्लैब रे हमें भलरे जानिचे सपोज गोटे लाइट आसिके इथे इंसिडेंट करे ताले कोन हबो, दिस इज द नॉर्मल। पुणी देखो इथे रिफ्रैक्शन हबो, रिफ्रैक्शन हला परे पुणी अथरे सेकंड सरफेस रे पड़िबा परे पुणी दूरे की जीवो। तो इंसिडेंट रे आउ एमर्जेंट रे पैरेलल तो रहिबे किंतु देयर विल बी ए लेटरल शिफ्ट। देखो आपको जदि इंसिडेंट रे को हमें फॉरवर्ड प्रोड्यूस करिबा देयर विल बी ए लेटरल शिफ्ट। देखो ठीक बड़ करी हम देखौ तुमको देखा जीवो, एटा ऑलरेडी हम डिस्कशन करिचे लेटरल शिफ्ट रो वीडियो को देखो, ठीक बड़ करी देखाए तुमको। सपोज देखो ए पोर्शन को टिके मु मैग्निफाई करी देखैली। सपोज ये हला मोर नॉर्मल गोटे रे आसिकी जदि एठी पड़े, एठी तो हमर रिफ्रैक्शन हबो। ओके, जेहेतु रेडार मीडियम रो डेंसर मीडियम को जाउची नॉर्मल आरो को डेविएट करिबो, पुणी एठी नॉर्मल टू दूरे जीवो। ओके, ताहले एटा को जदि हमें सॉरी एते पैरेलल हिक रहिबो, हमर इंसिडेंट रे को पैरेलल हिक रहिबो। किंतु हमें जदि याको प्रोड्यूस करिबा एमती देखो there will be a shift, there will be a shift। देखो एटा हो गोटे शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट बोली याको कहा जाए, लेटरल शिफ्ट। एंड हमें जानिचे the expression for lateral shift is equal to t times 1 minus 1 by mu। तो थिकनेस ऊपर डिपेंड करे हमर लेटरल शिफ्ट टा। तो थिकनेस जते कम हबो लेटरल शिफ्ट मध्ये सेते कम हबो। इफ t tends to 0 then your shift will be also tends to 0। क्लियर? तो सेठी पई हमें कोन करछे ना ए जो पोर्शन टा को बहुत थिन नेबा को चेष्टा करछे। सेठी पई प्रथम मोर एजम्पशन रे म लिखिली द थिकनेस ऑफ द लेंस इज वेरी स्मॉल। थिकनेस जते छोटो ही जीवो, थिकनेस जते छोटो ही जीवो हमर शिफ्ट टा भी सेते टेंड्स टू 0 आड़ को जीवो। बुझ परले? सो दिस इज द कांसेप्ट बिहाइंड, दैट्स व्हाई द एजम्पशन। ताहले एठी हमर देखो पूरा अनडेविएटेड पूरा पूरी पास करिवो विदाउट एनी शिफ्ट। एक्चुअली टिके शिफ्ट हबो ड्यू टू इट्स थिकनेस, किंतु आमे से शिफ्ट को नेग्लेक्ट करके चलीबा, डेविएशन हबनी बोली आमे एज्यूम करिबा। क्लियर? सेमती एठी भी देखो आर भी देखो गोटे रहिबो एपटे, तो आकु भी जे देखो आमे जदी यार भी देखो गोटे सेंटर रहिबो, यार भी गोटे देखो सेंटर रहिबो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए दुइटा जाक सेंटर ऑफ कर्वेचर को जदि हम जॉइन कर देबा ताले वी विल गेट द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो दुइटा जाक प्रिंसिपल एक्सिस कोन बुझा पड़िला। सेमिति आर भी गोटे ऑप्टिकल सेंटर रहिबो, जो पठे जदि लाइट पास करे इट विल मूव अनडेविएटेड, डेविएशन न हे कि हमर पास करिवो। से पॉइंट को हमरा कहा जाए ऑप्टिकल सेंटर। आ ए ऑप्टिकल सेंटर को हमें पोल परिका बिहेव करिबा हमर साइन कन्वेंशन अनुसारे, साइन कन्वेंशन अनुसारे हमें कौन करिबा सुनो। दो ऑप्टिकल सेंटर को जदि हमें P बोली ना देबा, ऑप्टिकल सेंटर को जदि P बोली ना देबा किंबा O बोली ना देबा और O जहां भी ना रखिबा, तो ए ऑप्टिकल सेंटर को हमें ओरिजिन बोली मानिबा। आ इंसिडेंट रे जो दिगरे गति करूची सेही दिगरे मेजरमेंट जदि करिबा दैट विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव। All the measurements along the direction of incident ray from the optical center will be considered as positive, and all the measurements opposite to the direction of incident ray from the optical center will be taken as negative, and a transverse measurement above the principal axis will be taken as positive and below the principal axis will be considered as negative। Okay, clear? बुझी पारला? सो देखो सपोज एटा होचे हमरो लेंस, थिन लेंस देखो कंसीडर कली। सपोज ये होचे मोर ऑप्टिकल सेंटर हला, ऑप्टिकल सेंटर सपोज O, एटा हला मोर सपोज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो दिगरे गति करिबा देखो सेही दिगरे मेजरमेंट ता माने ए पटे हबो मोर पॉजिटिव। इंसिडेंट रो दिगरे ऑप्टिकल सेंटर थ्रू जति की मेजरमेंट करा जिवो दैट विल बी पॉजिटिव, आ इंसिडेंट रे रो ऑपोजिट दिगरे जति की भी मेजरमेंट करिबा दे विल बी नेगेटिव। आ प्रिंसिपल एक्सिस रो ऊपर को ट्रांसवर्स मेजरमेंट पॉजिटिव हबो, आ तळ को जति की मेजरमेंट हबो से गुडा को नेगेटिव हबो। क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर
terms connected to your lenses. So lens को जीवा पूर्वरु पूरा डेप्थ को जीवा पूर्वरु ए सब जिंस हमको जानिबा को पड़िबो तापर जीवा हमें प्रिंसिपल फोकस तो आरो दुईटा प्रिंसिपल फोकस थाए प्रथम होची फास्ट प्रिंसिपल फोकस तो फास्ट प्रिंसिपल फोकस कहा को कहा जाए आसो बुझिबा सपोज दिस इज माय convex lens and this is my principal axis. Okay, this is optical center, let it be O. Suppose एठी गोटे कोठी प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर कोठी गोटे एमती का स्पेशल पॉइंट अछि प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर एमती का गोटे स्पेशल पॉइंट अछि which is unique for a particular lens. एठू जदी लाइट एमर्ज करे ता माने ये होचे हमर ऑब्जेक्ट पॉइंट बोली कहि परिबा हमें ऑब्जेक्ट जदी एठी गोटे रखिबा ताले दीटा इंसिडेंट रे जदी एठू बाहर रिफ्रैक्शन हे सारिबा परे they will be parallel to each other so also parallel to the principal axis ता माने जदी गोटे रे हमें प्रिंसिपल एक्सिस भी देई कि छाड़ीबा ताले तीनटा जाका रे रिफ्रैक्शन हे सारला परे they will be parallel to each other. That means a object रा image का formation हबो कोठी infinity रे formation हबो the image distance will be infinity. Clear to all of you? देखो so convex lens case रे it is a point on the principal axis, it is the object point on the principal axis for which the image will be formed at infinity. तो ए point को कहा जाए हमारा fast principal focus या को कहा जाए फास्ट प्रिंसिपल फोकस आ ए दूरता को ऑप्टिकल सेंटर टू f1 जदी हमें ना देबा या को कहा जाए फोकल लेंथ फॉर फास्ट प्रिंसिपल फोकस. क्लियर? ओके देखो जदी हमें गोटे कनकेव लेंस कंसीडर करिबा जदी हमें गोटे कनकेव लेंस कंसीडर करिबा ताले ये होबो हमरो प्रिंसिपल एक्सिस. ओके ताले देखो एठी जदी गोटे कन्वर्जिंग रे आसे सपोज कन्वर्जिंग रे आसिला एठी कोन हबो रिफ्रैक्शन हे सारिबा परे दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर आ जदी गोटे रे स्ट्रेट भी जाए सी तो एटा मिडिल पोर्शन ता जेहेतु स्लैब ग्लास स्लैब परिका बिहेव करे ग्लास स्लैब रे हमें जानि जे नॉर्मल इंसिडेंस हला माने देयर विल बी नो डेविएशन स्ट्रेट चलिबो. तो देखो एटी जेमति तीनटा जाक रे पैरेलल हे हिथिले एटी भी तीनटा जाक रे पैरेलल हे जिबे एटी थिला हमर रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट इन केस ऑफ योर कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस रे देखो ए इंसिडेंट रे दुईटा जाक को जदी मु प्रोड्यूस करबी फॉरवर्ड जदी प्रोड्यूस करबी फॉरवर्ड ताले दे विल मीट एट ए पॉइंट दे appear to meet at a point ए पॉइंट को कहा जाए फास्ट प्रिंसिपल फोकस for the concave lens. That means it is the virtual object point on the principal axis for which the image is at infinity. So it is the virtual object point. This is the virtual object point on the principal axis for which the image is at infinity. Again image एडी देखो infinity रे image formation आइतिला एठे मध्य image ता हमर infinity रे ही formation हबो तो आको कहा जाए फास्ट प्रिंसिपल फोकस. तो देखि परुछ ए जो लेंथ ऑप्टिकल सेंटर टू ए जो दूरता आको पुणी f1 बोली ना देबा सो दिस इज कॉल्ड योर फोकल लेंथ. फास्ट प्रिंसिपल फोकस रो ऑप्टिकल सेंटर थारु जति की दूरता ताको कहा जाए फोकल लेंथ फॉर फास्ट प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ. Clear to all of you? Clear? Okay? So देखो repeat करके देखो it's a very important point. अच्छा द्वितीय रे जिबा सेकंड प्रिंसिपल फोकस so सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहा को कहा जाए प्रथमे हमें कंसीडर करिबा
convex lens. So this is my principal axis. तो एठी आमे जदि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी रे रखिबा, if object is at infinity, the rays will be coming parallel to each other. ऑब्जेक्ट जदि हमर इंफिनिटी रे थिबा त माने एठी u is equal to infinity. एठी देखो हमरा v is equal to infinity थिला, एठी u will be infinity. ऑब्जेक्ट जदि हमर इंफिनिटी रे थिबो ताले पैरेलल सेट आसी कि रे जदि प्रिंसिपल एक्सिस सहित पैरेलल हे कि जदि रे आसे रिफ्रैक्शन हे सारी बा परे से माने गोटे पॉइंट को कन्वर्ज करिवे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. तीनटा देखो रिफ्रैक्टेड रे को देखो ए तीनटा देखो रिफ्रैक्टेड रे गोटे पॉइंट रे आसी कि हमरा प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर मीट करिवे एंड दैट पॉइंट दैट इमेज पॉइंट दिस इज इमेज पॉइंट is called your second principal focus, the real image point. This is the real image point. कहीं ना हमर तीनटा जाको रिफ्रैक्टेड रे 70 मिसी चंती ए पॉइंट रे. Actually they converge at this point. That's why this is my real image point. The real image point on the principal axis for which the object is at infinity is called the second principal focus, and the distance of the second principal focus from the optical center is called your focal length. This is called your focal length. This is called your focal length. Second principal focus ro optical center tharu durata ko kuha jaye focal length. Similarly, in case of diverging lens or concave lens, this is the principal axis. Okay, ताहले आमे जदि पूरी पैरेलल रे कंसीडर करिबा दुईटा ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी ओवर हियर, तो इटी कोन हबो देखो सी, तो कोन हबो तो इटी जेतु इटा होचे हमरा डाइवर्जिंग लेंस, ये होचे हमरा डाइवर्जिंग लेंस, तो रिफ्रैक्शन हे सल्ला परे दुईटा जाक रे डाइवर्ज करिवे, दुईटा जाक रे देखो डाइवर्ज करिवे, तो डाइवर्ज करिवे आ ई जो रेटा हमरा तो अनडेविएटेड पास करि जिवो काहेकि ना मिडिल पोर्शन ता ग्लास स्लैब परिका बिहेव करिवो, नॉर्मल इंसिडेंस रे देयर विल बी नो डेविएशन. तो ए तीनटा जाक रिफ्रैक्टेड रे को हम जदी मार्क करिबा दे आर डाइवर्जिंग, they cannot meet, they will meet if produced backward. आपको जदि backward produce करिबा they will appear to come from this point. ए पॉइंट रो देखो तीनटा जाक रे बाहरिला परिका लागुची, they appear to diverge from this point which is called your second principal focus for the concave lens. Clear to all of you? And this distance optical center tharu এই সেকেন্ড প্রিন্সিপাল ফোকাস র দূরতা কো আমি f2 বলি না দেবা, and this is our focal length. This is our focal length. Let me see whether the video is running or not. Yes, it's running. Clear to all of you? वीडियो को पुणी और रिपीट करके देखो, your concept will be very clear. So this is the virtual image point. This is the virtual image point. Virtual image point. Virtual image point on the principal axis for which the object is at infinity is called your second principal focus. आउ आगो को आमे देखिबा ए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस रो इंपोर्टेंस एतेटा नाही, किंतु आरंभ रु शेष पर्यंत ए चैप्टर हमर शेष हेबा पर्यंत ए जो हमर सेकंड प्रिंसिपल फोकस जहा को आमे कहूचे आपको f2 ना देबा, f2 सॉरी. सो ए जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस होची हम पई सबुठ इंपोर्टेंट, आ एठी क्लियरली देखि परिबो तमे जे सेकंड प्रिंसिपल फोकस हमर इंसिडेंट रे रो दिगरे रहूची, तेनु करी f2 इज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. फोकल लेंथ यू सी फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स लेंस and focal length is negative for your diverging or concave lens. एटा कंटिन्यू करिवो, एटा पूरा कंटिन्यू करिवो, मने रखो पूरा माइंड रे प्रिंट करो.
जेतेबेले कन्वेक्स लेंस आसीबो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव काहे ना हमें सेकंड प्रिंसिपल फोकस को ही फोकस बोली भाबिबा काहे ना एटा काम रे आसीबनी दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज द रियल फोकस ओके या ऊपर हम डिस्कशन करबा तो फोकल लेंथ जोठी आसिला हमर कन्वर्जिंग लेंस इंसिडेंट रे रो डायरेक्शन रे मेजरमेंट करा जाउची तेनु करी इट इज पॉजिटिव एटा देखो इंसिडेंट रे रो ऑपोजिट दिग रे मेजरमेंट करा होची तेनु करी इट इज नेगेटिव क्लियर ओके सो वीडियो को रिपीट करके देखो कांसेप्ट आउरी क्लियर ही जिवो नाउ वी आर स्विचिंग टू लेंस फार्मूला व्हिच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट Okay. Now we are switching to lens formula. So what is lens formula? Lens formula is nothing but the relation between object distance, image distance and focal length. सो ए तीनटा फिजिकल क्वांटिटी विषय माने भितरे जो रिलेशनशिप अछि ताकू कहा जाय हमरो लेंस फार्मूला सो लेंस फार्मूला होची 1/f = 1/v - 1/u तो आको हम डिराइव करिबा तो तीनटा हमरो सिचुएशन आसीबो तीनटा केस आसीबो तो तीनटा केस को वर्तमान तुमको बुझौची सुनो सपोज दिस इज माय lens convex lens okay and this is the principal axis so this is the principal axis is the principal axis suppose this is generally eta ko neba ame f hala तो या को नेबा जो डिस्टेंस को f नेबा तो दिस इज सपोज 2f ओके ए डिस्टेंस राउची f दिस इज 2f सो एपटे नेबा सिमती f आउ एपटे नेबा 2f क्लियर हमें गोटे काम करिबा एठी गोटे ऑब्जेक्ट नेबा ओके तो एठी गोटे ऑब्जेक्ट को नेबा टू एफ बाहर भी रखिले हबो कोई जोठी भी रखि परिबा हमें गोटे इंसिडेंट रे गोटे टिके सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट ए दिस इज बी ऑब्जेक्ट ए बी इट गोटे पैरेलल रे छाड़ीबा गोटे पैरेलल रे छाड़ीबा हम समस्त जानि छे पैरेलल रे आसिला माने ये कोपट पास करिवो इट विल पास थ्रू द फोकस दे की पास करिवो फोकस दे की पास करिवो देख पाछो मने रखो स्टेप को मने रखो पैरेलल रे आसिला माने फोकस दे की सब बेले जीवो पैरेलल रे आसिला माने रिफ्रैक्शन हला परे डेफिनेटली फोकस दे की पास करिवो आ गोटे रे कंसीडर करिबा जोटा की ऑप्टिकल सेंटर दे की पास करेबा एंड इट विल गो अनडेविएटेड डेविएशन बिल्कुल न ही कि हमरा पास करी की जीवो like this okay you see सो दुईटा जाक देखो रिफ्रैक्टेड रे एठी एक्चुअली देखो मीट करिसंती तेनु करी हमर इमेज फॉर्मेशन हबो एठी so this is the perfect diagram for the convex lens producing real image
तो फर्स्ट केस होची हमरो कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसिंग रियल इमेज तो ताहले आपको ए बी ना देबा देखो ए रो इमेज टा हमरो देखो 80 फॉर्मेशन हैला आपको ना देबा हमें ए प्राइम बी रो इमेज टा जदी गोटे रे को हमें एम्प्टी छाडी देबा पूरा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल मूव ऑन डेविएटेड तो आसी की 80 हमरो फॉर्मेशन हबो ताको ना देबा हमें बी प्राइम सो दिस इज द फोकस एफ हला आपको कोन गोटे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ना देबा सपोज एम आपको ना देबा ओ क्लियर तो एठी गोटे स्ट्रेट लाइन एठी गोटे फुट ऑफ परपेंडिकुलर टाणीबा फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम ओ सो एवरीथिंग इज नाउ रेडी देखो हमें दुईटा ट्रायंगल कंसीडर करिबा कंसीडर टू ट्रायंगल्स कंसीडर टू ट्रायंगल्स ए बी सी आपको सी बोली ना दे दबा चलो कोई बात नहीं ओ देले भी चलिबो किछ असुविधा नहीं ए बी सी एंड ए प्राइम बी प्राइम सी देखि पड़छ ए दीटा ट्रायंगल दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल ए जो बड़ ट्रायंगल देखि पड़छ ए दुईटा जाक ट्रायंगल देखो सिमिलर कोन पई you see this is 90 degree this is also 90 degree and these two angles are opposite angles so duita quantity jodi amar saman rahe tahale two triangles are similar so we can write from the property of similar triangles we can write a prime b prime b prime divided by ab the ratio of the corresponding sides will be the same is equal to b prime c divided by bc this will be my equation number 1 clear so authory puni dekho a prime b prime divided by ab is equal to b prime c divided by bc now again we will consider two triangles a prime b prime f and mcf देखि पारुछ a prime b prime f ए ट्रायंगल टा जो ए ट्रायंगल को देखि पारुछ ए ट्रायंगल को देखो आ ए ट्रायंगल को देखो mcf ए दीटा भी सेम हबो केना दिस इज आल्सो 90 डिग्री दिस इज 90 डिग्री एंड दीटा जाक एंगल ऑपोजिट एंगल अछि तो ए दीटा ट्रायंगल हमरो सिमिलर हेबे तो सिमिलर ट्रायंगल पई हम कोन लिखि परिबा पुनी a prime b prime divided by corresponding side होची mc will be equal to b prime f divided by cf clear अच्छा ठीक है देखो so this implies हम लिखि परिबा a prime b prime divided by mc देखो mc जगह रे mc is equal to ab mc is equal to ab कहीं ना देखो ये पैरेलल सेट जाई ना ए दीटा जगह देखो प्रिंसिपल एक्सिस को रेटा पैरेलल ही कि जेहेतु जाई छी ताले ab जति की हबो mc सेति की हबो तनो mc जगह रे हमें ab लिखि परिबा mc जगह रे ab जदी लिखिबा we will get a prime b prime divided by ab is equal to b prime f divided by cf होगा कि नहीं now this will be our equation number 2 equation 1 को 2 को यदि हमें कंपेयर करिबा तो कंपेयरिंग equation 1 and 2 we get हमको कौन मिलिबा देखा equation 1 को 2 को यदि हमें कंपेयर करिबा we will get देखो लेफ्ट साइड सेम अछि कि नहीं लेफ्ट साइड देखो सेम अछि तो राइट साइड भी सेम हबो ताले b प्राइम c divided by bc will be equal to b prime f divided by cf clear तो b prime c divided by bc is equal to b prime f by cf एति की जो डेरिवेशन हमें करले दिस डेरिवेशन इज कॉमन फॉर ऑल केसेस देखो गोटे सेकंड केस भी आसीबो मोइटी टानुची दिस इज द convex lens
producing real image। तो सेकेंड मु देख डायग्राम गोटे टाणुची मु सेकेंड डायग्राम टाणुची देख टिके केयरफुली। तो सेकेंड डायग्राम मोर एमती हबो जोटी के मोर वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हबो केमती हबो देखिबा। सो ये हला मोर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ओके। अच्छा सपोज ये हला मोर फोकस ओके। आमे गोटे ऑब्जेक्ट एठी नेबा कोड टू कोड भितरे ऑप्टिकल सेंटर आउ फोकस भितरे जदी ऑब्जेक्ट को नेबा माने एठी ऑब्जेक्ट रहइबो फोकस आउ ऑप्टिकल सेंटर भितरे जदी ऑब्जेक्ट रहे ताले कोन हबो टिके देख। या कथा हमें आउथरे नेक्स्ट वीडियो रे बहुत डिटेल डिस्कशन करिबा तो एठी जदी गोटे मु पैरेलल रे छाडुची एठी देखो पैरेलल रे मु छाडी दउची तो पैरेलल रे डेफिनेटली हमरा फोकस दे के पास करिवो तो फोकस दे के पास करिवो फोकस दे के पास करिवो आपको टिके मु बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देई थाए। देखो आउ गोटे रे को मु कोन करिवि ऑप्टिकल सेंटर दे के छाड़ीबी देखो यू सी वेरी इंटरेस्टिंग केस। देखो गोटे रे पैरेलल हे की गला गोटे रे देखो पैरेलल हे की जिबा परे फोकस दे के पास करके गला रिफ्रैक्टेड रे सेकंड टा देखो हमर जदी ऑप्टिकल सेंटर दे के छाडी देबा दे आर डाइवर्जिंग तेनु आकु जदी हमें बैकवर्ड प्रोड्यूस करिबा ए दुईटा जाक रे को रिफ्रैक्टेड रे को ए दुईटा रिफ्रैक्टेड रे को जदी हमें बैकवर्ड प्रोड्यूस करिबा दे विल मीट एट ए पॉइंट। एटी देखो मिसिला परिका ए दुईटा जाक रिफ्रैक्टेड रे देखो ए पॉइंट रो बाहरिला परिका लागुचंती दैट्स व्हाई दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच लाइज बिटवीन योर फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर रे जते बेले भितरे ऑब्जेक्ट रहिबो मने रखो नेक्स्ट वीडियो रे आ ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करिबा ऑब्जेक्ट कोठी थिले इमेज कोठी फॉर्मेशन हुए इमेज रो कोन कोन कैरेक्टरिस्टिक्स तार मैग्निफिकेशन एवरीथिंग हम डिस्कशन करिबा। नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपोर्टेंट। सो ये होउची मोर वर्चुअल इमेज, दिस इज माय रियल इमेज एंड दिस इज माय virtual image, this is my convex lens producing virtual image। second case ita amaro okay exactly nomenclature same a prime b prime okay this is my point m this is c okay पूरा देखो everything तो ए पर्यंत डेरिवेशन पूरा पूरी कॉपी पूरा या पाई मध्य डेरिवेशन सेम पूरा सेम नो चेंज टा ए टू स्टार्ट हबो तो थर्ड केस रो भी डायग्राम हम एठी टाणीबा। तो थर्ड केस होची सो या पाई दुईटा केस कन्वेक्स पाई आ कनकेव पाई गोटिए केस काहेकि ना कनकेव लेंस सब बेले वर्चुअल इमेज ही फॉर्मेशन करिवो तेनु यार केवल गोटिए केस हमर कंसीडर करिबा। तो देखो एठी गोटे ऑब्जेक्ट नेबा दिस इज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कनकेव लेंस गोटे पैरेलल रे छाड़ीबा गोटे पैरेलल रे हम छाड़ीबा ओके। तो गोटे पैरेलल रे जदी छाड़ी देबा ताले रिफ्रैक्शन हे सरला परे सी डाइवर्ज करिवो एटा हो हमर डाइवर्जिंग लेंस जेहेतु तो ये कोन करिवो ना डाइवर्ज करिवो ताको टिके बड़ कर देबा डायग्राम को यू सी रे केमति देखो डाइवर्ज करिछि तापरे आउट रे को हमें कोन करिबा ऑप्टिकल सेंटर दी की छाड़ी देबा इट विल मूव अनडेविएटेड देखो विदाउट रे फास्ट देखो
डाइवर्ज करिवो सते जेमिति कि कोट बारला परिका लागिवो माने रख ये होची फोकस फोकस तो पैरेलल रे आसिला माने एमिति डाइवर्ज हो जे फोकस रु बाहरिला परिका लागिवो दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस फोकस और सेकंड जे तो हमर ऑप्टिकल सेंटर दे के पास करिछि तन करी इट विल मूव अनडेविएटेड ए दुईटा देखो डाइवर्जिंग हमर रिफ्रैक्टेड रे एठू बाहरिला परिका लागुछि देखो ए पॉइंट को देखो समझते ए पॉइंट रे देखो दीटा देखो हमर बाहरिला परिका लागुछि दैट्स व्हाई दिस इज माय इमेज पॉइंट दिस इज माय इमेज पॉइंट तो ये हला ए दिस इज बी दिस इज ए प्राइम दिस इज बी प्राइम तो ये होछि हमर concave lens producing virtual image तो concave lens producing virtual image clear तो सेमती नोमेनक्लेचर आपको हमें एम ना दीचे दिस इज सी एवरीथिंग सेम देखो तीनटा देखो केस पाई तीनटा देखो केस पाई वर्तमान ए पर्यंत जो डेरिवेशन मोर सेम इक्वेशन सपोज को मु 3 बोली ना देबी तापर हमें जीवा फर्स्ट केस रे देखो ऑल द मेजरमेंट्स हमर साइन कन्वेंशन अनुसार ऑल द मेजरमेंट्स आर मेड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर आउ इंसिडेंट रे रो डायरेक्शन रे जो मेजरमेंट हबो दैट विल बी पॉजिटिव आउ ऑपोजिट दिगरे जदी मेजरमेंट हबो नेगेटिव एटा हम डिस्कशन करि सारिछे ताले हम गोटे काम करिबा ए इक्वेशन को एमति लिखिबा यू सी आको मु सी टा को प्रथम लिखुची सी को फर्स्ट रे लिखुची तापर लिखुची बी प्राइम डिवाइड बाय सी बी इज इक्वल टू बी प्राइम एफ डिवाइड बाय सी एफ तो इक्वेशन को टिके देखिले सी बी प्राइम देखो सी बी प्राइम ये होची हमर कोन दिस इज माय इमेज डिस्टेंस अच्छा नेक्स्ट होची देखो सीबी कोन CB, this is my object distance. U, this is my object distance. और CF कोना? CF होची हमर focal length ताको F ना देबा focal length किंतु गोटे जिंस देखो B प्राइम F को डायग्राम रे देखो B प्राइम कोडे गला हमर देखो B प्राइम F ए डिस्टेंस का हमको बिल्कुल जाना नहीं तापर हमर कोनोसी नॉलेज नहीं तो हमें कोन करिबा आपको चेंज करिबा जेमति के सी आसीबो कहीं ना ऑल द मेजरमेंट्स आर मेड फ्रॉम सी तो आपको देखो केमति करिबा सो दिस इंप्लाइज CB प्राइम डिवाइडेड बाय CB इज इक्वल टू B प्राइम F देखो डायग्राम को देखो B प्राइम F इज इक्वल टू CB प्राइम माइनस CB प्राइम माइनस CF सो दिस इज CB प्राइम माइनस CF डिवाइडेड बाय CF पूछ कि नहीं देखला B prime F is equal to CB prime minus CF clear this is the only change ए तीनटा देखो केस रे केवल ए गोटिए रे चेंज आसीबो बट द फार्मूला विल बी सेम देखो एटु गोटे जिंस मते कहि परिबो CB प्राइम देखो डायग्राम को देखो CB प्राइम आउ CF ए तीनटा जिंस ही एट रही तो CB ये कोन मोर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस CB प्राइम कौन इमेज डिस्टेंस what is the CF is nothing but your focal length तो as per sign convention मतलब कोई परिबो CB देखो यू सी CB इंसिडेंट रे रो ऑपोजिट दिगरा मेजरमेंट जेहेतु करा होची दिस इज माइनस u CB प्राइम इंसिडेंट रे रो डायरेक्शन रे मेजरमेंट करा होची दिस इज प्लस v एंड फोकल लेंथ देखो सब बेले पॉजिटिव कीप इन माइंड ए पटर तक हम कंसीडर करि बानी मु तुमको कहतिली सेकंड प्रिंसिपल फोकस को कंसीडर करा जबो दिस इज F प्लीज कीप इन माइंड एटा थिला मोर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस सेकंड प्रिंसिपल फोकस होची इंपोर्टेंट पॉइंट रे आसला माने पैरेलल हे कि से फोकस देकी जबो दिस इज द रियल फोकस ओके सेकंड प्रिंसिपल फोकस को कंसीडर करिबा दिस इज पॉजिटिव सो दिस इज प्लस F क्लियर कन्वेक्स लेंस आसला माने फोकल लेंथ इज पॉजिटिव concave focal length negative keep in mind okay now substitute करिबा तो CB prime V divided by minus U is equal to CB prime होची हमर V
माइनस एफ डिवाइडेड बाय CF होची हमर F. Just I have substituted with keeping in mind the sign convention. Sign convention अनुसार हमको ताको substitute करिबा. Now cross multiply. तो VF is equal to minus UV plus UF. Cross multiplication कला परे VF will be equal to minus UV minus minus plus UF. आपको कौन करिबा हमें UVF रे डिवाइड कर दबा. UVF रे डिवाइड कर दबा या को भी UVF रे डिवाइड कर दबा. तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग 1 by U is equal to minus 1 by F plus 1 by V. तो 1 by F को हमें लेफ्ट को नहीं जीवा. तो 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U. This is the Lenz formula. So this is the Lenz formula. This is the Lenz formula. Clear to all of you? तो कौथरे टिके वीडियो को बैक करिके पुणी अथरे रिपीट करिके देखो. The derivation is very simple, very simple. Now मु कोन करबी देखो. I am switching to second diagram. Second केस को वर्तमान मु जाउची. मु तुमको प्रथम रो कहली ए